cricket tournament organized by SK Jogging Cricketers, the Shivani Developers Premier Trophy. Grand finale, Arav 11, Quepem winning the toss and deciding to bowl first against Abeer Baba Cricketers Bardez. Openers in the middle, Rajat Khudarkar and Punaji Kalangutkar. And with the ball to start off the proceedings, looks like it will be Somesh Dodamani. So all in readiness then for this grand finale. 8 overs game. First over was mandatory power play overs. Fourth over being the SK Jogging Challenge over, where you need to get 16. So the additional 8 runs will be added to your tally. Rajat Kudalkar on strike. Somesh Dodamani from the nursery end. Here we go, and left alone. Dot delivery to start with. Officials in the middle. Legendary Vaman Mayekar and his partner Rajesh Signapurkar. As the television umpire, we've got Sushant Salgaonkar. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. Harish Kakodkar, Ashok Naik sir, Jay Bhosle sir, and yours truly Shyam Kalangutkar. Nicely played. And that will be first runs of this final. Gets off the mark with that single, does Rajat Kudalkar. What 2 semi-finals we had earlier. First semi-final, Abeer Baba Bardez. Almost match-to-match like to them. To the Prithika Warriors, Pernim. Winning that game by 1 run. So close that game was. That's big. That's Punaji for you. No matter the distance, no matter the occasion, he will just know one thing. See the ball, hit the ball, and that clean he has striking. Score moves on to 7. He's totally box office, this man, Punaji. Swing missed this time. This time it's a wide. Extras. Very fast is Somesh Dodamani. The faster you bowl, the faster you'll travel. And the review has been taken by the bowling team. TV umpire to director. We have a player review for a wide. On-field decision is wide. Let's see if it gets overturned or it stays like that. It will stay as a wide. So you can continue. It's wide, signaled again by the umpire. Swing missed. Again trying to go up and over. The infield missed it completely. Dot delivery. Fabulous setting this. Lights. Then those wooden trophies created by Nilesh Shari. Always so good to see. Last year also we saw some new innovation. This year also something different. That's up in the air. Fielder getting underneath and taken. That's a big wicket. Punaji Kalangutkar departs. It's 8 for 1.
does he have? Nicely played. Looking for a quick single. Chance for an out. No, not quite. If that would have been taken cleanly and would have hit Rajat Kudalkar, would have been gone for all money without facing a single delivery. But very fortunate to get away with that. Single 20 after completion of 1. It's 9 for 1. आमच्या आनी एक मानेस्त सिद्धेश श्रीपाद नायक झेडपी मेंबर कुमार जुवा हांगा पाविल्ले आसात आनी येवकार करतात तांकां कमेंट्री बॉक्सांतल्यान तशेंच एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स ऑर्गनायझर्सा तर्फे बसका घेवची आनी फायनल जी आसा ती एन्जॉय करची. Wicket from the Mapsa City end. Lets that one go, and that will be wide. Extras. Just trying to bowl a looseness starting with that one. Score moves on to 10. Definitely Bardez put into bat will be looking to get in an excess of 100 in these 8 overs. Nicely bowled. Good delivery. Vicky Naik was absolutely superb in that first game. Him and Imran along with Alvino set up the tone. Big total, and the Sattari were found wanting. Good delivery. Again trying to go on the onside. Will get to the mark with that single. Manoj Varak. So many fond memories of this tournament in this edition. Hat-trick, then 5 sixes. Some terrific batting. And that semi-final one. What a game we had. 2 runs were required on the last delivery. And Amrut will Lekar. तशेंच लक्ष्मीदास चिमुलकर हांगा पाविल्ले आसात. सरपंच अंजुना पंचायत आमी तांकां येवकार करतात आनी सराक विनंती करता की बसका घेवची आनी फायनलीचो आस्वाद घेवचो. तशेंच तारक बाब आरोलकर तुमकांय बी येवकार करतात. Nicely played. Oh, just over Sanjay Naik's head. Gets off the mark with that single, does Rajat, in a tricky fashion. But we'll take it any day. तशात आमच्या मुखार पावल्ले आसात लक्ष्मीदास शिमुलकर, सरपंच अंजुना कायसो विलेज पंचायत. Up in the air and gone, another one gone. Second wicket down. Left-handed batsman trying to switch, and he switched into the hands of the fielder at short third. Second wicket down of Bardez. As the local and the premier batsman, king of rivers, Sanam Salgaonkar makes his way out in the middle. Has a responsibility along with the young prodigy, Rajat Kudalkar, to get going in this grand finale. I must have seen Sanam perform many a times, in many occasions.
but this is the biggest stage. He needs to make it count. All the dignitaries in that VIP box will be certainly eyeing for a great finale. Looks like wants the keeper up to the stumps. Vicky Naik needs to just create a bit of pressure on Sanam not to try anything fancy at the start. Full toss delivery down the ground. Up and over he goes. And that's for one bounce over the ropes. Sanam gets off the mark with the boundary. (16) on the scorecard. Second over in progress. One delivery remaining of the second over. Man has been sent back on the boundary rope. Reverse. That's more like it. That's the Sanam we know. That's what we have come to see. A maximum. Boundary and a maximum to finish off the over. After completion of 2, it's 22 for 2. These two men possess. Rajat Kudalkar, form of his life. Talking about Sanam, well, he has not left his form. It's continuing. You just don't know when he'll fire. Today could be the day. Today could be the night. Viresh AGM has been given the ball from the nursery end. 2 overs 22 for 2. Going at 11 runs per over. Abeer Baba cricketers Bardez put into bat by Arav 11 Quepem. Down the ground, Rajat Kudalkar, fielder, will watch it sail over his head for a maximum. Score moves to 28. Reverse sweep. Oh, bad bounce. Just over. Very unfortunate for that fielder. He was already lining up to field that one, but it just bounced over him. 4 more. Full toss delivery that time. A slower one. Picked nicely down the ground. Will just be a single. Score moves on to 33. We are in the third over. Next one will be the SK Jogging challenge over.
A new advancement coming in this game to make it more delightful, more likable, and more crowd pulling events that have been made. And that SK Jogging challenge over certainly has provided some fun. Lets that one go, and that will be wide. Extras. Score moves to 34. The Warriors owner Dinesh Naik is also here with the team, supporting them. Full toss delivery. Straight to Vicky. Dot delivery nevertheless. Sanam Salgaonkar knows these kind of situations, has been playing a lot of cricket. Goa, Maharashtra, Karnataka. So much of time he has in his batting. Reverse. Missed this time. Very minimal time you see him missing that reverse. The king of reverse. You can proclaim him with. Nicely played down the ground. On the bounce to the field, that does well. No, down there. Will just be a single. Single to end the over after completion of 3. It's 35 for 2. 35 for 2 after 3 overs. Bhaya about the SK Jogging challenge over. 16 runs is the challenge. Just to tell our viewers, 16 runs is the challenge. You need to get 16 in whatever deliveries that you can do from the 6 deliveries that are given to you. Within 16, if you get those 16, additional 8 runs will be added to the tally. If you don't get them, if suppose you get 10, only 5 runs will be added to the total. Change in bowling. This time swapping ends is Somesh Dodamani. This time coming from the Mapsa City end. Sanam Salgaonkar is on strike. Just wants to get the field right. Short pitch delivery outside the off stump, and that's wide. Extras. Top edge and gone. Just trying to turn it around. Top edged and taken by the fielder. Viresh Heshiam down there taking that catch. And the big wicket of Sanam Salgaonkar. 36 for 3. Bardez in some sort of trouble at the moment. Abeer Baba cricketers Bardez. Short and wide, cut away, and no chance.
Gone into the crowd. That's 4. Score moves to 40 with that boundary. So far, only 5 runs have been scored of 2 deliveries in this challenge over, requiring another 11 in those remaining 4 deliveries to complete that challenge. Challenge completed, get your 8 runs. That's up in the air again, looking for the big hit and big wicket again. Amrit Lekar has disappointed the crowd. He's gone for only 4. It's 40 for 4. Batsman of SK Jogging Cricketers. The time, the precision that he takes, and how he goes about his business is really eye-catchable. Nehal Mandrekar, perfect all-rounder, setting examples, needs to fire tonight. He has got his partner, Rajat Kulalkar, at the other end. Need to communicate well with these two so that you can build a partnership and create an impact in this game, as already the Quepem are bossing. They have the upper hand right now. Good delivery, nicely played, looking for a quick single, and will make it quite comfortably in the end. Single taken, gets out the mark with that single, does Nehal Mandrekar. Score moves to 41. Let's forget about that 41. Just remember, this is the challenge over. 6 runs of 4 deliveries, requiring another 10 in 2 to complete the challenge. Rajat goes big, and that's in the crowd, sailing over the extra cover boundary for a maximum. What a shot that is. Short and wide and cut away with power. Four runs required of this delivery to complete that challenge. Can he make it count, Rajat? Oh, just missed his step. Somesh Dadamani. I had a one-on-one interview with most of the players. They're saying too much of cricket this season. Body needs some rest. And definitely that is the talking point. 8 hours of sleep is compulsory. Many parents, many players who are in the middle, they have got their family members also watching this game. Down the ground, has he split the gap? Oh, a bit of fumble, but that will only be a single. Rajat disappointed, but he is still there in the middle. So let's see what does our scorer tell us. After 35, after 3, it was 35 for 2. So only 7 runs will be added. 35 plus 7, it becomes 42 for 4 after completion of 4 overs. We are done with the SK Jogging Challenge over, where they could manage only 7. They scored in total of 13. 7 runs were given to them. Deduction of 6 runs. So in total, 42 runs after 4 overs being lost and 4 overs being bowled. So a lot of crowd tonight, and also so many viewers. Almost has gone past 20,000 viewers.
It will be change in voice at the start of the fifth over. It will be Jay Bhosle sir in the commentary box. आयोजन इस प्रतियोगिता के दौरान और ये अंतिम मुकाबला एक टीम घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के सामने और इस बार खेला वस्तु ताकत लगाना चाह रहे थे लेकिन गेंद ऊपर उठी नहीं है। एक रन और खाते में जुड़ा। अभी अभी जो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तब आपने यूट्यूब के ऊपर देखा है कितना क्राउड कितने दर्शक यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा कैमरा हर एक दर्शक के चेहरे के ऊपर के हाव भाव यहाँ पर आपके सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। tenniscricket.in के माध्यम से इस प्रतियोगिता का लाइव प्रक्षेपण किया जा रहा है। दर्शकों की काफी तादाद में उपस्थिति इस मैदान के ऊपर। तो मैं बात कर रहा था इन दो टीमों की। घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के सामने हल्का सा दबाव था। लोग आए थे पुनाजी का खेल देखने के लिए, लोग आए थे सनम सालगांवकर का खेल देखने के लिए। सनम सालगांवकर ने निराश नहीं किया, दो बड़े शॉट जरूर लगाए। अब रजत कुड़ालकर की बारी है अपने टीम के लिए इस सिचुएशन से बाहर निकालना, एक बड़ा टोटल 100 के आसपास का टोटल खड़ा करना मैदान पर। नेहाल स्ट्राइक पर सामना करेंगे इस गेंदबाजी का। विनेश की ये गेंद थोड़ी सी चहलकदमी करी थी, पीछा करना चाह, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। सेमीफाइनल का मुकाबला यादगार मुकाबला रहा इस प्रतियोगिता के दौरान। आज की ये अंतिम रजनी और जाते जाते कुछ सुनहरे पल दर्शक भी साथ लेकर जाएंगे, खिलाड़ी भी साथ लेकर जाएंगे इस मैदान से। ये थोड़ी स्लोवर वन, फिर की गेंदबाजी, थोड़ी सी फिरकी डालते हैं गेंदबाज विनेश मैदान के भीतर बीच बीच में। अगर बात की जाए इस प्रतियोगिता की, इस प्रतियोगिता में गोवा राज्य में एक नया आविष्कार इस एसके जॉगिंग ने दिया है, वो चैलेंज ओवर का। आने वाले अगले सीजन में हर एक प्रतियोगिता में शायद ये आविष्कार किया जाएगा चैलेंज ओवर का। अगले साल कुछ नया लेकर आएंगे जरूर मिडन ओवर के साथ। एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स नया कुछ हर एक साल में लेकर आते हैं प्रतियोगिता के दौरान। थोड़े से हटकर खेला हुआ स्ट्रोक, हवाई फायर जरूर करी है, फील्डर के हाथ को लगती हुई गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। पर 49 महत्वपूर्ण विकेट जाने के बाद ये जोड़ी संभालती हुई अपनी टीम की नैया को। फिर एक बार थोड़े से हटकर खेलने को सेपल ज्यादा हुए थे बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद थोड़ी सी आगे डाली गई थी, विकेट कीपर के हाथों में निकले बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। अभी भी बहुत ओवरों का खेल पड़ा है, लेकिन उससे पहले एक साझेदारी की आवश्यकता। झटपट रन, सामने वाली टीम की गेंदबाजी नेस्तनाबूद करने वाली बल्लेबाजी आपको करनी है, तभी तो दबाव सामने वाली टीम के ऊपर आ सकता है। फुल टॉस गेंद, ये तो शायद ऊपर थी गेंद, देखने वाली बात, हवाई फायर खेला है। देखना है अंपायर का इशारा क्या आएगा यहाँ पर। अंपायर ने रेफर कर दिया है थर्ड अंपायर के लिए, ये नो बॉल है या नहीं ये चेक किया जाएगा, लेकिन कैच जरूर पकड़ा है। यहां पर सिंगल बनेगा या आने वाली गेंद फ्री हिट होगी या विकेट जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चेक किया जा रहा है थर्ड अंपायर यहां पर। फिलहाल दर्शक भी काफी तादाद में मौजूद है, बार बार दर्शकों को दिखाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब पर लाइव होने के बावजूद भी इतने सारे दर्शक यहां पर मौजूद है। आप सभी दर्शकों का भी इस मैदान के ऊपर हार्दिक हार्दिक स्वागत इस क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान। अंतिम मुकाबला और इट इज अ नो बॉल।
नो बॉल, यानी कि आने वाली गेंद होगी फ्री हिट। या ठिकाणी माजी रणजीपटू हर्षद गडेकर यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। आपल्याला विनंती असेल या ठिकाणी व्यासपीठावर येऊन आपण स्थान नवं। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या निमित्तानं। हर्षद गडेकर माजी रणजीपटू, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपल्याला विनंती असेल व्यासपीठावर येऊन आपण सामन्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे। फ्री हिट की गेंद ये दोबारा डालनी पड़ेगी, वाइड गेंद, अंपायर का इशारा और एक अतिरिक्त रन और 50 रन भी इसी के साथ पूरे होते हुए टोटल पहुंचा है 52 52 रन स्कोर बोर्ड पर। वाइड गेंद फ्री हिट जारी रहेगी और मौका मिला रजत कुड़ालकर के लिए ये फ्री हिट की गेंद का सामना करने के लिए। इस सीजन में एक हाफ से एक सेंचुरी इनके नाम दर्ज है। फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले के साथ खेला, मिड विकेट की दिशा में एक रन तो जरूर निकलेगा, एक रन के साथ जोर बदला। फ्री हिट की गेंद के ऊपर ज्यादा रन नहीं निकले। ओवर समाप्त हो गया है पांचवा, 5 ओवरों का खेल समाप्त, 53 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर और विकेट अब तक निकले हैं 4। तो सामने वाली टीम को घरेलू मैदान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। अच्छा शुरुआत तो नहीं मिला, लेकिन उसके बाद ये जोड़ी यहाँ पर 5वें विकेट के लिए साझेदारी जरूर बना रही है और इस साझेदारी को आखिर के ओवर तक रखना पड़ेगा। एक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान के ऊपर करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए। (53) ऑन स्कोर बोर्ड, 4 विकेट के नुकसान पर। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी और एक बिंदी गेंद समाप्त, गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। 5 ओवर का खेल समाप्त, 6वां ओवर प्रगति पर, 53 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर। Meanwhile, we welcome here Shri Aditya Challa, the owner of Sushagado Micro Breweries, and Mr. Anuj, owner of Indian Beer Factory, are here to watch the finals. विकेट गेंदबाज इस बार उठा कर खेला है, 2 खिलाड़ी आ रहे हैं गेंद तक लेकिन पहुंच नहीं पाए। हाफ चांस था, सामने गिरी थी गेंद, 1 रन तब तक पूरा हो गया है। थोड़ी सी ताकत और जो लगाते तो सीमा रेखा पार निकलती थी। मिड विकेट के ऊपर वो बड़ा गैप है, उस गैप को ढूंढने की कोशिश थी रजत कुड़ालकर की, लेकिन टाइमिंग हुआ लेकिन ताकत थोड़ी सी कम पड़ गई। इस बीच 1 रन पूरा हो गया, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 54 54 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर, 6वां ओवर है प्रगति पर। बहुत ही बढ़िया माहौल क्रिकेट के लिए, दर्शकों का मानव सागर उमड़ा हुआ इस मैदान पर मुकाबला देखने के लिए। 54 54 रन स्कोर बोर्ड पर। और इस बार देखिए एक बैठक स्ट्रोक, फाइन लेग के ऊपर से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। लगाने की कोशिश, जो स्पेक्टर्स वहां पर बैठे कृपया आप बाउंड्री लाइन से दूर बैठे, वहां पर फील्डरों को कोई दिक्कत ना हो। एक कुशल मुकाबला है, आपके लिए एक सूचना है खास करके। एक शॉट लगाया था, डॉट बॉल, बिंदी गेंद,
एक सिक्सर लगा है प्रजेश उर्फ विकी की गेंदबाजी पर। आगे निकलते हुए खेलने की कोशिश, फिर एक बार गेंद, थोड़ी सी छोटी गेंद थी, बल्ला थोड़ा सा सीधा किया था, गेंद टिपक गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली और एक बिंदी गेंद समाप्त हो गई। एक छक्का लगा है और छक्के के बाद अच्छी वापसी विकी नाइक की। एक तेरी एक मेरी, इस तरह से कुछ मैदान के ऊपर चलता हुआ, कभी गेंदबाज कभी बल्लेबाज एक दूसरे के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं इस मैदान पर। ओ ये छोटी गेंद, ये घूम कर खेला, फाइन लेग के ऊपर से गेंद तारामंडल में, शंकर के कमंडल में, 6 रन के लिए। थोड़ी सी यहां पर तेजी बढ़ती है स्कोर ने। 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 66 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, प्रति ओवर 11 के औसत से रन बनाते हुए नजर आ रही है यहां पर अबीर बाबा बारदेज की टीम इस मैदान पर। गेंदबाजी में और एक बदलाव और गेंदबाजी के मोर्चे पर चंद्रेश को बुलाया गया है। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। 66 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। यहां से अब 40-45 रन बनते हैं तो मैच और रंगीन आ जाएगा, जो कि दूध से रहा है स्टेडियम के ऊपर। रोशनी देखिए कितने सुबह का आभास निर्माण करने वाला ये मुकाबला, ये आयोजन इस मैदान पर। 66 लॉस ऑफ 4 विकेट, कंप्लीशन ऑफ द 6th ओवर। चंद्रेश गेंदबाजी के लिए कुत्ते कुत्ते का पहला टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर सामना करेंगे रजत कुडालकर स्ट्राइक एंड पर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट कर रहे एक मिड विकेट पर खिलाड़ी, एक मिड ऑन पर, एक लॉन्ग ऑन पर, एक लगभग डीप एक्स्ट्रा कवर पर, एक बैकवर्ड थर्डमैन की दिशा में एक खिलाड़ी को भेजा गया है, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात। और इस बार उड़ाया है गेंद, फिर एक बार हवाई फायर, सीधी कमान से निकली हुई तीर की तरह, 6 रन के लिए रजत कुडालकर बैंडर सिक्सर। इस छक्के के बाद इनाम देखिए निहाल के लिए आता हुआ, हर एक छक्के के लिए सानवी चारी की ओर से 500 रुपए का इनाम यहां पर घोषित किया जाता है। छक्का लगाया रजत ने और इस बार उड़ाया है, फिर एक बार हवा में, खिलाड़ी पहुंच पाएगा नहीं, कैच हो सकता था, प्रयास अच्छा था, आत्मसमर्पण कर दिया था मैदान पर, लेकिन गेंद आखिर में हाथ से छूटी। एक जीवनदान मिला है रजत कुडालकर को, 1 रन के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 73 टोटल स्कोर बोर्ड पर। अब रफ्तार थोड़ी सी बढ़ चुके हैं, एक आध बड़े शॉट की और आवश्यकता इस मुकाबले में और रन बनाने के लिए। चंद्रेश गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे नेहाल इस गेंद का, और इस बार हटकर खेलने की कोशिश, शरीर से जरूर टकराई है यहां पर, और जब तक हिट हो जाती तब तक पहुंचे थे अपने प्रॉपिंग क्रीज में रजत कुडालकर। देखना है अंपायर का इशारा, जी हाँ, लेग बाइट्स का आता हुआ, यानी शरीर से टकराई है गेंद। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 74 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर। दर्शक आस लगाकर इसीलिए मैदान पर आते हैं, छक्के चौके देखने को मिले, एक आध ओवर अच्छा देखने को मिले। यहाँ पर टेनिस बॉल क्रिकेट में ये तो माया है, यहाँ पर हमेशा कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल, कभी धूप कभी छाया, ये तो प्रभु की माया। मैदान पर ये क्रिकेट चलता हुआ टेनिस बॉल का, और इस बार उड़ाया, फिर एक बार, देखते रहे दर्शक बनकर रहे खिलाड़ी, और एक गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए है।
रजत है, लेकिन काम स्वर्ण वाला कर रहे हैं मैदान पर। ओ ये अल्टी पल्टी वाला शॉट खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, बिंदी गेंद निकली है। टोटल 80 पर पहुंचा है टीम का टोटल, 4 विकेट के नुकसान पर। 5वें विकेट के लिए एक शानदार साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में नजर आ रही है। अच्छे मुकाम तक लेकर आए अपने टीम के लिए। छोटी गेंद फिर एक बार खेला, एक बार कवर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ कवर के ऊपर से गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। खेल समाप्त हो चुका है। 86 ऑन अ स्कोरबोर्ड, 86 रन स्कोरबोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर। और 100 का आंकड़ा इनको बुला रहा है, शायद 100 का आंकड़ा हम पूरा करेंगे, गेंदबाजों के लिए एक बड़ा टोटल खड़ा करेंगे। इस इरादे के साथ ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज इमरान मुल्ला गेंदबाजी के ऊपर आखिरी ओवर डालेंगे, सामना करेंगे नेहाल। इनके लिए इनाम लगा है हर एक छक्के के लिए 500 रुपए का, लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा क्या 100 का आंकड़ा पार होता है। इस बार थोड़े से सफल हो गए थे, खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन के साथ स्ट्राइक पर लेकर आए रजत कुड़ालकर को। पिछले ओवर में 20 रन बने हैं और रजत कुड़ालकर ने लगाए थे बहुत ही बढ़िया शानदार स्ट्रोक। यहां पर 2 छक्के रजत के बल्ले से निकले थे, 1 छक्का लगा था यहां पर नेहाल के बल्ले से। बहुत बढ़िया कारनामा कर दिखा इस मैदान पर। ओ अल्टी पल्टी वाला शॉट नहीं बना, यहां पर थोड़ी सी स्लोअर वन, फिर की गेंदबाजी इमरान की इस मैदान पर। 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, 100 का आंकड़ा अभी भी दूर है। 87 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 87 लॉस ऑफ 4 विकेट, लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। एक क्रिकेट का महासंग्राम इस मैदान पर। इस बार एक गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। 88 रन स्कोरबोर्ड पर, 88 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सिंधुदुर्ग और गोवा राज्य के टीमों के बीच में कल आपने भिड़ंत देखी। 5 टीमों को पहली बार हिस्सा लेने का मौका इसके जॉगिंग क्रिकेटर्स ने दिया था इस मैदान पर। ओ इस बार उड़ाया शॉट को, सिर्फ आप देखिए, ये रजत नहीं, ये सुवर्णमय कारागिरी है रजत कुड़ालकर के। टोटल पहुंचा 94, 94 रन स्कोरबोर्ड पर। नाइन्टी 94 रन। और इस बार खेला हुआ स्ट्रोक सीधा खेला, वहां पर खिलाड़ी डीप पे तैनात। 1 रन तो जरूर मिलेगा, शायद दूसरे की मांग होती है, देखने वाली बात होगी। यहां पर मेरे ख्याल से नेहाल को वापस जाना पड़ेगा, अपना बल्ला छोड़ा ही नहीं रजत कुड़ालकर ने। विकेट पर सैक्रिफाइस जरूर करिए, क्योंकि जानते हैं आखिरी गेंद का अगर खेल भी बचा होगा और मौका रजत को मिलता है तो बड़ा शॉट निकल सकता है। और एक विकेट निकला, एक शानदार साझेदारी पनप रही थी 5वें विकेट के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस नेहाल का भी अभिनंदन कीजिए, बहुत ही बढ़िया। जब संकट में थी टीम, तब संकट मोचक बनकर उभरे और अपने टीम को 94 रनों के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर, नाम इनका है शुभम झा। पिछले मैच में इन्होंने 3 बड़े बड़े लंबे हिट लगाए थे अपने टीम के लिए। 2 गेंदें अभी भी बाकी है, टोटल पहुंचा
95 95 रन पर 2 गेंदों का खेल बाकी। क्या ये 2 गेंदे शुभम दा बाहर भेजेंगे या रजत कुडालकर के लिए मौका पेश करेंगे, देखने वाली बात होगी। 48 रन पर खेल रहे रजत कुडालकर, 49 पर खेल रहे, 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से। ये गेंद शायद वाइड का इशारा आता हुआ स्ट्राइक पर लेकर आए रजत कुडालकर को। 1 रन खाते में लिखा जाएगा। टोटल पहुंचा है 96 96 रन पर और 49 पर अब आ चुके हैं रजत कुडालकर। क्या ड्रीम बैटिंग यहाँ पर, गोल्डन आर्म यहाँ पर मैदान पर अपने टीम के लिए। या निश्चित रूप से 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। नए बल्लेबाज नामदेव बाणावलीकर मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। सनम सालगांवकर का समावेश इस अंतिम मुकाबले के दौरान अपना काम कर दिया उन्होंने, और लेकिन बेहतरीन साथ निभाया रजत कुडालकर का। ओ नेहाल ने अपने बल्लेबाजी से सामने वाली गेंदबाजी को बेहाल कर दिया। इस तरह से नेहाल की बल्लेबाजी देखने को मिली मैदान पर। अब देखना है 2 गेंदों का खेल बाकी है। 96 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 100 के लिए 4 रन की आवश्यकता। ओ यहां पर गेंद को जाने दिया, शायद वाइड के लिए रिव्यू के लिए जाएंगे या नहीं। जी हां, वाइड के रिव्यू की मांग की है यहां पर। अभी भी इंतजार है इस पारी का। अंतिम मुकाबले में अर्धशतक बनाना हर कोई चाहता है। ये सुनहरे पल लपेटकर 1 साल का इंतजार करना हर कोई चाहता है। दिल बहुत कुछ चाहता है लेकिन सभी को वो नहीं मिलता। जिसके नसीब में है उनको जरूर मिलता है। 96 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। देखना ये गेंद वाइड है या नहीं, और इट इज अ फेयर डिलीवरी, यानी कि रिव्यू खारिज हो गया। अब आखिरी गेंद का खेल बाकी। 100 के लिए 4 रन की आवश्यकता, 50 के लिए 1 रन की आवश्यकता। बड़ा शॉट लग जाएगा, 100 का आंकड़ा भी पार होगा और 50 रन भी पूरे हो जाएंगे रजत कुडालकर के घरेलू मैदान पर, घरेलू दर्शकों के सामने। और इस बार उड़ाया है, खड़ी हो गई है गेंद निकल रही है लेकिन फील्डर को ढूंढ लिया यहां पर, और 49 रन पर वापस निकले हैं। लेकिन ये 49 रन जो है ना, ये कभी 50 से भी कम नहीं है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए रजत कुडालकर के लिए। बहुत ही बढ़िया दिलेरी बल्लेबाजी मैदान पर 49 रन बनाकर अपने टीम को 96 रन तक लेकर आए और 97 रनों का एक बड़ा टोटल पार करना पड़ेगा आरव 11 केपम टीम को। तो निश्चित रूप से पहली इनिंग यहां पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद माइक्रोफोन पर आएंगे हरीश काकोड़कर, लेकिन उससे पहले मैं एसके जॉगिंग जो एक ब्रांड बन चुका है इस क्रिकेट प्रतियोगिता में, क्रिकेट वर्ल्ड में, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रतियोगिता के दौरान मुझे मौका दिया, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करके यहीं से आप सभी की रजा लेता हूं। धन्यवाद। तशेंच हांव विनंती करता लोकांक वचनाकात, कारण एक बारीक क्षण आमी लास्ट एडिशनाक केल्लो। आता हे प्लेयर भायर वतात तर जो प्रकाश ज्योत आता तुमकां दिश्टी पडटा तो आता खंय तरी तो बंद जातलो आनी अख्खो काळोख जातलो। आनी काळोख जातकीच सगळ्यांक विनंती करता, तुमचे मोबायल आसा ते हातान घेयात, तुमचे जे बायक आसा आता त्यो चालू करात आनी ज्यो बायकाचे लायटी आसा त्यो चालू जावपाक जाय। जशी लास्ट लायट हांगा बंद जातली तशें तुमचे मोबायलाचे टॉर्च आणि बायकाची जी लायट आसा ती पेटयात, जेणे करून मागीर तुम्ही एक व्हिडिओ नाल्यार रील करपाक शकता जे सुंदर दिसतले। तर सगळ्यांक विनंती करता तुमचे मोबायल हातान काढात आणि हो क्षण जो आसा तो कवर करात, हो टिपात आणि एक बरेशे तुमकां व्हिडिओ आसा तो मागीर मेळटलो। पूण हाजे खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय। जितले जाण बायकवाले आसात फक्त एकट्यान बंद केली आनी फक्त 2 जाणांनी पेटयले म्हणून जायना। सगळ्यांक फक्त चडांत चड 1 मिनटा खातीर विनंती करता, सगळ्यांक 1 मिनटा खातीर तुमच्या मोबायलाची लायटीची टॉर्च आणि बायक जी आसा ताजी हेडलायट ही मातशी चालू करात जाता तितले बेगीन। सुंदर दिसता, मागीर तुमकां एक बरें कॅप्चर करपाक मेळटलो मोमेंट।
तर विनंती करता सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचे. येस एवरीवन, जे सगळे मदीं आसा पळय तांचे खूब जाणां कडेन बायक आसा पूण बायक चालू करूना, चड पेट्रोल वचना. फक्त 1 मिनटा खातीर. थँक्यू. चलया सगळ्यां कडेन मोबायल आसा, मोबायल तरी काडात आनी टॉर्च पेटयात, जेणे करून जो सुंदरसो वो मोमेंट आसतलो तो तुमकां आमगेले ड्रोन कॅप्चर करतलो. तुम्ही तुमच्या मोबायलान कॅप्चर करपाक जाता आनी एक सुंदर जो क्षण आमी हो टिपपाक शकता SK जॉगिंग क्रिकेटर्स टुर्नामेंटाक. तो आता टोटल काळोख जाला. सगळ्याचे मोबायल हांव परत एकदा विनंती करता मातशे पेटयात. लायट जी आसा तुमचे हेडलायट बायकाची ती चालू करात. आणि ड्रोन जो आसा तो सगळो मोमेंट जो आसा हांगा कॅप्चर करपाक चालू आसा. It's looking so beautiful at the moment on the ground. Everyone is cooperating. जबरदस्त मोमेंट. अशे सपोर्ट असो कोऑपरेशन तुमचो सदांच आसचो जेणे करून उत्साह जो तुमचोच न्ही जाल्यार उत्साह ऑर्गनायझर्साचो जेणे करून वाडटा. दिनेश बाबा तुका राविल्लो आसा. सदांच क्रिकेटीक सपोर्ट करपी टिमी घालपी रिद्धी वॉरियर्स आनी नॉर्था जावं सावथा जावं लायव्ह जेन्ना आसता तेन्ना दिनेश बाब सदांच फॉलो करता. सगळी क्रिकेट टेनिस क्रिकेट जावं नाल्यार लेदर क्रिकेट जावं
आणि असोच सहकार्य तुजो क्रिकेटर्सांक ऑर्गनायझर्सांक तेको असोच सतत रावनी. देव बरें करूं दिनेश बाब तुज्या मोलादीक हातभारा खातीर. तशेंच आतां जशें आमी टुर्नामेंट म्हणटा जाल्यार ओदोर सांगिल्लें की स्पॉन्सर्स ना जाल्यार टुर्नामेंट केन्नाच मुखार वचपाक शकना, कारण प्रत्येक जाण आपल्या परीन कितें कितें सहकार्य करता ताजे खातीर जी उर्बा जी आसा ती ऑर्गनायझराची वाडटा आनी तांकां दिसता की यस आमच्या फाटल्यान आसा हात आनी त्या खातीर आमी फुडें वचचें. असो मोठो जो हात आसा स्पॉन्सर लिस्टा भितर ते शिवानी डेव्हलपर्स, शिवशंकर अनंत मयेकर हांकां आमी सगळ्यात पयलीं देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच मोहित चोपडेकर जो हांगा आमचे मदीं आसा आनी सदांच स्पोर्ट्सा बाबतीन ताजो तेको सहकार्य सदांच चालूच आसता. सुपर किंग डिस्टिलरी, RBR बीच रिसॉर्ट्स, विकास बाब आरोलकर, आरती प्रवीण चारी, गोवा ब्रिविंग कंपनी, किंगफिशर, विनायक डेकोरेटर्स, साईशा क्रिकेटर्स, कमलाबाई बार अँड रेस्टॉरंट, दिगंबर कलंगुटकर, खेडेकर कॅटरर्स, चारी डेको, बुल्स आय एंटरटेनमेंट, वैभव सालगांवकर, प्रशांत नायक, लिक्विड गोल्ड, मदानी बार अँड रेस्टॉरंट, शिवा व्हॅली, इरा सिटिंग वर्ल्ड, ओएसिस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, टीचर्स पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर, रॉयल डॉक्टर वॉटर, रवीश टोपले, सत्पुरुष वाइन, ओम लॉन रेस्टॉरंट, RSA खेल फाउंडेशन, प्लान फॉर द प्लॅनेट, सुदीप फास्ट फूड, Z Mobiles and Appliances, Curly's Beach Shack, Little Goa Bar and Restaurant, Amani Events and Production, Saiba Bar and Restaurant, Sanvi Baban Gowde, Ethernet Express, Ramesh Wines, Walke Dairy and Sweets, Gemini Associates, Waystar, Sushegado, Octa Brewery, Neo Majestic, Diageo, Lilliput Beach Cafe. So thank you to all the sponsors. It's been a big sponsors list because the tournament itself is big and require support from all the nook and corners. And we are indebted immensely to all your support, whether it's monetary or whether it's in kind for this cause. And because of this, this tournament has leaped to a very high scale, high level. As usual, as every edition, we get something new. And this is one more grand edition from SK Jogging Cricketers. So we thank all sponsors wholeheartedly. Special thanks to Comunidad of Mapsa for providing the ground. कारण ground ना जाल्यार फुडले काय जावपाक शकना. सो देव बरें करूं म्हणटा कोमुनिदाद ऑफ म्हापसा, तुमी हो खेळपा खातीर ग्राउंड दिल्लो आसा. Hello. So let us begin here for the run chase. In maybe another 30-40 minutes, we'll come to know who is going to be the new champions. The lights are full into effect. The crowd is all ecstatic. They are waiting anxiously. Yes, I can understand Bardez are in the finals, but they are always supporters of good cricket. The local Bardez people have come in large number to support their near and dear ones, their friends, the family members. That is Arav 11 Quepem, who is also a very strong side. They played a good cricket up till this point of time. And we just say, let the best team win. Here is Malinga. He starts off. What a start. He was going for the switch hit and fired outside the off stump. No chance for the batter. .97 runs required. See, you can see Mahesh Sakalkar. This is he is 40. He is a class act. During the last moment, he just changes the grip of the ball and bowls that leg cutter as off cutters. Otherwise, he is most of the time bowling the Yorkers. Lovely shot. There's a fielder down there, so it's just going to be a single.
plays in the deep covers, the cover drive. They exactly know, you can see the field placement where the bowlers are bowling and the ball is going in the same areas. That's because everyone is now reading each other's game. There are so many panchayat and municipality level tournaments organized. Everyone is aware of the skills of the opponents. And that is also a part of learning cricket. This is in the air. This is a big wicket. This is a big wicket. And it's taken. The man in form, the terminator of Sheldon, Alvino Carvalho, has been taken out of the contest here in the finals. What a wonderful disguised slower ball here. Leg cutter it was from Malinga. And he went for it, getting the leading edge, taken easily. And a big strike. And another man in form comes in. His teammate in the Panchayat tournament, Imran Mullah. So again, this time left. That is what he is capable of. He just takes 3 or 4 steps and then fires it in. It's like a missile coming from his hands. Sometimes slow because of the short distance, sometimes quick. And that's why he is one of the highly rated bowlers in entire Goa. Not just for the sake of a reason. Lovely change of pace once again. Looking for a wide, and wide has been given. It's called wide by the umpire, maybe saying that it is just way outside the line of off-stump. But Malinga is using his brains at the moment. Mahesh Sakarkar, as popularly known as Malinga, one amongst the few players in Goa who becomes the icon just because of his bowling class. Fired it in, looking for a single. Play and a miss. That was the quicker one. So it's the cat and mouse at the moment going on between the bat and the ball. Malinga is not giving a hint here to the batters what is coming up next. And that's the sign of a very skillful bowler. Another change of pace here. Bowling the leg cutter, cutting it away towards the backward point region. Stopped by the fielder and just concedes a single. They won't be bothered about the singles. They know that they have to stop the bounties and sixes, especially in the power play overs, where only the 2 fielders kept in the deep. In comes Rupesh. Not in the best of the forms of late, but just 1 or 2 strikes and he'll be back with a bang. This might be, was it a chance there? Was it a chance? It was taken lightly here by the keeper and could have been a big wicket if Rupesh was taken. So first over, Malinga started in the most beautiful fashion that a bowler can do. Is disguise the batters and he just concedes 5 runs. He's 5 for 1 at the end of 1. There are so many tournaments held in Goa, almost every week, every month. But I'll tell you one thing. These players will always remember winning SK Jogging tournament because this is a big trophy where so many spectators, more than a lakh spectators joining on YouTube. More than 1,000, 2,000 spectators here are live. And this trophy is always remembered as one of the coveted championship.
It's a Taluka level championship this time. So it's a fight between the Talukas, fight between the talent, fight between the skills of the north and the south. Well, let's see which skills here at the moment is going to come on top to be crowned as the champions, and the other side has to wait for one more year. In comes Tushar, nicely bowled. Coming from the here local region, played a lot of cricket here, certainly knows how to bowl on a deck like this. Looking for the big one, but they are not giving anything easy at the moment. Imran looking to go downtown, getting a inside part of the bat and just getting a single. Someone needs to go and needs to go all out against this headache. These ones and twos is not going to reach them towards a target. Crowd is waiting anxiously, watching this game. They know that a thriller is in the making. Not even a single taken. He's not striking the best at the moment. It's just one or two. The Spartan of Malkarni at the moment is little down. But it's just one roar from Spartan, and he's going to be a destroyer. This is one. There's a fielder down there. It might be taken. Once again, missing the timing. Outside part of the bat. Rupesh goes back, and the struggle continues. Is 6 for 2. We are into the second over. And in comes Sanjay Naik, captain of the side, and the side is in a spot of brother. They lost both the openers. Alvin went, and now Rupesh in the dugout. Sanjay Naik is a really smart and hard-working player. Not only in bowling, as a bowler he is too good, but as a batter as well, he is very clever. He knows when to strike, when to take the opportunity of the singles, knows exactly how to play with the field. So just missing his run-up, Tushar. The bowling is impeccable at the moment, bowling in the right channel, and which is troubling the batters to go for the luxurious shot. Went for the sweep, never reached to the pitch of the ball. This left arm medium pacers and left arm orthodox have got different skills of their own, because they have creating a different angle, coming in and going away to the right hander. This should be a boundary. This should be a boundary. Full toss ball clipped away on the square leg region, and there is the first boundary coming for Arav 11 of Quepem. That's straight into the end of the second over. 10 for the loss of 2 after the completion of 2. So a lot of time still left in this game. Just the 2 overs have been bowled. 97 is a mountain to climb. And they are making a decision at the moment who is going to bowl the third over. The power playing restrictions have just eased off, and the batters have not got enough of runs. So I somehow feel both the batters are going to target one of the bowlers who feels that it might be the weakest link into the bowling lineup. But you can't keep it too deep. You have to take the charge. You have to take the attack to the opposition in a quick time. You can't rely back on the last 4 overs or 3 overs and get around 50 or 60, which doesn't happen, because that puts pressure on the batters coming up next if you lose wickets. Just like a partnership that we saw between Rajat Kudakar and Nihal. That partnership was very crucial to get this team back at the top. It is a similar sort of partnership that is required in the run chase here for Arav 11 Quepem.
So at the moment, Bardez cars, the north side is a little bit upbeat after taking those two important wickets. In comes Rohan. Lower full toss ball, and he's a very, very street smart player. Plays for Team Asnora in the village panchayat municipality levels, but coming in Bardez Taluka. So you can imagine the strength of this team in bowling department. They've got a lot of options as the captain. Exciting times ahead. Right in the block hole, inside edge, going down towards the short tournament region. And he's like a machine. Rohan Salgaonkar, he can bowl that Yorker length at will most of the time. He was very successful. Always picks up wickets of the important players. Lovely shot. Has he found a gap? That's been fielded nicely in the deep, just restricted to a single. So good coverage of the ground. That was nicely stretched by Sanjay Naik and going for that cover drive. So they are keeping the ball slightly away from the reach, from the hitting arc, from the hitting zone, which is keeping the sixes and the boundaries away from the batting side. And might be just a single. So dealing in singles at the moment, nothing happening for the batting side, but it's just a matter of 1 over. One blast from someone, and suddenly you can see everyone is going to fall apart. That's how the game of cricket is. It just suddenly piles up the pressure. Just a moment, just a fraction is enough. It's just the ages. It's just the ages. At the moment, the edge is towards the bowling side. Outside edges, inside edges are going straight to the fielders behind the keeper. Fantastic bowling here from Rohan Salgaonkar, not giving an inch. Another Yorker here, and Sanjay is playing and missing altogether at the moment. Arav 11, Quepem are struggling against the high-class bowling performance of Abeer Baba Bardez. That marks the end of over number 3. He's just 13 on the board for the loss of 2. A lot of tension is creeping at the moment in the camp of Arav 11 Quepem. They have done a fabulous job coming into the finals, beating some of the strong side, and even the semi-finals, it was just one-handed. It was a one-sided affair. But now coming to the finals, they are against more professional outfit who are upbeat. They just won by 1 run, and sometimes when you win by 1 run, is the confidence there to just pumps up within you. So they are a spirited bunch of unit at the moment, Abeer Baba Bardez. And that can be seen. That positivity can be seen among the players. And now the second over for one of the most skillful bowlers of Goa, Mahesh Sakalkar. This is absolutely magnificent. Magnificent bowling. How well and how consistent you can fire the Yorkers. The wide Yorker is the most difficult ball, and he's doing it with ease. Another one. This is high class bowling. Well, you can't blame the batter. Nothing can be done here. Absolutely nothing can be done. This is like a machine has been told, asked, you got to hit this, and he's hitting it. And he's doing it better at the moment. I think even a robot could not do such thing so magnificently what Mahesh Sakalkar is doing. That's why he's the icon, is the star and a representative of Goan bowling talent. And Bardez should be proud of Mahesh Sakalkar. He is a pure and a rare talent to have. Short ball, a surprise, wide call by the umpire. Slightly early, maybe wanted to surprise the batter over there. The batter might be thinking, yes, he might be bowling one more Yorker towards me, but he bowled back off length just outside. Wide call by the umpire. One more to the extras column.
Another Yorker. Nowhere to run. It goes straight into the bowler in his follow through. This is so good. Cricket at its best. The bowlers are on top of the game. It is a formidable batting side. Arav 11 Quepem. They have been shunned here. This time wide. The intention was to bowl that wide outside the line, just inside the guideline, but this time just crossed slightly wider. The crowd is still not going because they know it's just a matter of one good shot and they'll be back in the game. But those shots are not coming because the bowlers are not giving anything. It's the home crowd, and home people have created magic many a times. We remember the 2011 World Cup for India. The home crowd did the magic for the team. This is in the air, and oh, that was such an easy one. A big blip in the field here. This might be proving very fatal here for the fortunes of the bowling side. Abeer Baba. That should have been just swallowed by the fielder. Not a difficult chance by any stretch of imagination. Marks the end of over number 4. So 4 overs gone. 18 is just 18 on the board for the loss of 2 wickets. So the score is 16 after the challenge over was unsuccessful. Mahesh Sakalkar's over was kept in the challenge over. Challenge was unsuccessful. So you can imagine bowling in the challenge over and just conceding 2 runs. How good is that? That brings the championship even more closer. The software is loaded to almost 75-80% to win the championship. But they got to do it till the 100%, till the last ball, because you never know. There are any hiccups in between. It's Rohan once again. Once again that wide Yorker. It's unbelievable how consistent, how good they are. Both Mahesh Sakalkar and Rohan Salgaonkar showing why they are highly rated in the Goan cricket circle with their bowling. And another one. Wow. This is absolutely wow bowling here from the team Abeer Baba Bardez. What can they do? Imran Mullah is such a fantastic player. Is in the air once again, miscued, mistimed, up and over the covers region. There's a little lapse in the field here from the part of Tushar, but just going to concede a couple of runs. It's not that one batter is struggling. Both the batters are struggling at the moment, which is troubling them even more. Just the 18 on the board. Finally, it has come, but it has come directly in the 5th over, the first 6. So is it a signs of the things turning around? This is throwing caution to the winds here to the team of Abeer Baba Bardez. You never know, there is a storm somewhere down the line which might just come and burst up. But the storm has to be kept quiet, and if it has to be kept quiet, you got to pick up the wickets. The cricket, especially in the finals, is a roller coaster ride, and it's always enthralling. We see sometimes the game which is well gone, it just sometimes can create magic within the span of just 2 or 3 balls.
This time another straight hit and he gets a boundary. So 10 runs coming off the last 2 balls. Is it a turnaround? Is it a switch over? Is it going to upend here in towards the Arav 11 Quepem? Over to DJ. Third over 3. Fourth over just 3. Sliced away towards the backward point and the fielder just off the ball. So no run there. But this might be just the most costliest over in this inning so far, bowled by Abeer Bardez. 12 runs coming off that over, and that marks the end of over number 5. So far, the strength is in the bowling department, and they have hung on tightly. All the bowlers have bowled magnificently, and according to the field, and those Yorkers out of the 30 balls, I think 15 balls were Yorker length deliveries which could not be hit. Not even the bat can be touched. But definitely, the hearts of the people are touched by the organization of SK Jogging, and they have done an incredible job over and years again. 42 years it has been, and the gorgeous 42 years is culminating now with the final, and we just got 3 overs left after this one. So I'll see you off in the presentation ceremony. I'll give the 3 overs to Ashok Naik sir for the further updates to make the match more interesting from his voice. 28 for the loss of 2, required 97 runs. थैंक यू हरीश सर। 17 गेंदों का खेल 69 रन। रन रेट बढ़ चुका है, विकेटें भी खो चुके हैं। बैकफुट पर इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, कट किया, स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अभी भी चाहिए 65 रन मैच को जीतने के लिए, और 65 रन बनाने के लिए खेल सिर्फ बचा हुआ 16 गेंदों का। संजय नाइक और उन्हीं के साथ इमरान मुल्ला, ये जोड़ी मैदान पर। फिर से एक बार शॉट ऑफ लेन गेंद, बैकफुट पर कट करना चाहते थे। आज आल्विनो कार्वलो के आउट होने के बाद बहुत संघर्ष देखने को मिला बल्लेबाजी का, लेकिन सामने दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। इस बार खेला गेंद को ऑफ साइड पर, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं, निशाना लगा, बल्लेबाज खतरे में, और एक कामयाबी मिलती हुई अबीर बाबा क्रिकेटर्स, मापसा क्रिकेट टीम को। डीजे
परिवर्तन नामदेव बाणाव लेकर आ चुके गेंदबाजी में। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर एक सिंगल पूरा किया। 63 रन और 63 रन के लिए सिर्फ 11 गेंदों का खेल बाकी। 11 चेंडू 63 धावा। मुकाबला सेमीफाइनल का कांटे का रहा। आखिरी गेंद पर दूसरा सेमीफाइनल एक तरफी रहा और फाइनल का मैच। बेहतरीन शॉट मिड विकेट पर और फील्डर मौजूद मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते सिंगल डबल बनते हुए मैदान पर। इमरान मुल्ला ने काफी देर तक संघर्ष किया लेकिन 15 गेंदों में सिर्फ 18 रन और अल्विनो के आउट होने के बाद बिल्कुल टीम संभल नहीं पाई। जो साझेदारी बनी रजत कुडालकर और नेहाल मांद्रेकर के बीच में, वो बिल्कुल कीमती साझेदारी मैदान पर। शॉट ऑन पुल ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर बड़ी देर के बाद एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए। डीजे प्रीमियर ट्रॉफी एसके जॉगिंग कानकाबान मापसा। पहली बार गोवा और गोवा के साथ सिंधुदुर्ग के जिले की टीम हिस्सा लेती हुई, लेकिन आखिरकार जो मुकाबला दोनों के बीच में आरव 11 केपी क्रिकेट टीम सामने एक बड़ा टोटल बना दिया अबीर बाबा क्रिकेटर्स मापसा क्रिकेट टीम ने, और उसको जवाब देते हुए एक नाजुक हालात में मैदान पर फिर से देखना होगा। एक सिंगल बनेगा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल के साथ रन आगे बढ़ते हुए स्कोर बोर्ड पर टोटल 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौवन रन अभी भी चाहिए। फिर से एक बार सिंगल बनेगा, स्कोर में थोड़ा सा फासला कम हो गया। 53 रन अभी भी चाहिए मैच में जीतने के लिए। आरव 11 केपेम बिल्कुल हावी हो चुके हैं शुरू से बल्लेबाजी में। शुरू के विकेट होने के बाद साझेदारी बनी और वही से लेकर बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा अबीर बाबा क्रिकेटर्स ने। 7वां पर्व एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स का हमेशा की तरह एक बेहतरीन आयोजन दिन रात का। काफी दर्शक सम्मानीय अतिथि, आपका एक बार फिर से सभी का धन्यवाद इस टूर्नामेंट के साथ। बहुत जल्द आने वाली टूर्नामेंट अवेसम बॉयज कलंगुट, साउथ गोवा प्रीमियर लीग, कोलंबियन कोरजुवे, आमी कुणैकर चषक और खिंडीर बॉयज बोर्जिम चैंप्स बहुत जल्द, जो कि अप्रैल और मई में ये टूर्नामेंट। लेकिन उससे पहले शानदार ट्रॉफी, उस खूबसूरत ट्रॉफी के हकदार लगभग आपके सामने में वो स्पष्ट हो चुका है। लास्ट ओवर, आखिरी ओवर, अल्टी पल्टी की कोशिश, पैरों पे गेंद टकराई, अपने फॉलोथ्रो में आते गेंद को फील्ड करते। सेमीफाइनल में 6 गेंदों में 11 रन और वहीं पर अमृत वेरलेकर ने मैच में बिल्कुल वापस लाया। क्या खूबसूरत गेंदबाजी की अमृत वेरलेकर ने। और आल्विनो की बल्लेबाजी पर बहुत जो ज्यादा बिस थी वो बिल्कुल सफल नहीं रहे। बहुत जल्दी आउट होकर वापस आल्विनो कारवालो। अच्छा शॉट, गैप में बिल्कुल लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। मैदान पर सर राजेश शिंगनापुरकर, वामन मयेकर, रुपेश गावस, अंपायरों की ये त्रिमूर्ति। कमेंट्री बॉक्स में वॉइस ऑफ गोवा हरीश काकोड़कर, श्याम कलंगुटकर, जय भोसले और मैं अशोक नाइक। एक बार फिर से धन्यवाद सभी एसके जॉगिंग पूरी ऑर्गेनाइजर कमेटी को। बहुत ही एक बेहतरीन टूर्नामेंट में एक बार फिर से आपने मुझे मौका दिया। सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी मान्यवरों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैच समाप्ति की और एक तरफी मुकाबला रहा बिल्कुल। फुलटॉस गेंद उड़ाया मिड विकेट पर, गेंद तारामंडल में डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, सिक्सर। डीजे
साथ स्कोरर का भी मिला, सिद्धार्थ कोरगांवकर और नीलेश कोरगांवकर। स्कोरर की भी भूमिका बहुत अहम रहती है कमेंट्री बॉक्स में, और बहुत ही दो बेहतरीन स्कोरर सिद्धार्थ कोरगांवकर और नीलेश कोरगांवकर। उन्हीं के साथ हमारे विघ्नेश प्रभु जो ऑनलाइन स्कोरर, टेनिस क्रिकेट ओमकार सावंत कैमरामैन, सुशांत, अनिकेत और उनके कप्तान गौरव सावंत। जो दर्शक एसके जॉगिंग इस टूर्नामेंट के साथ यूट्यूब पर जुड़ चुके थे, दोस्तों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स में से अंतिम ओवर और सिर्फ औपचारिकता बाकी। अमृत वेरलेकर अपने बॉलिंग बार पर, हवा में शॉट, क्या मौका बनेगा कवर पर? जी बिल्कुल, गेंद हाथों में कैच को पकड़ा और मैच समाप्त हुआ। इस साल की चैंपियन अबीर बाबा क्रिकेटर्स, बाप सागर की टीम, अभिनंदन आपका।